Okay, students, good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is water in the atmosphere. That is chapter number 11 of your Fundamentals of Physical Geography notebook. Sorry, book. So, as we all know that water is present in the atmosphere in three forms, namely gaseous, liquid and solid, and it undergo transformation. Gaseous state में होता है, liquid state में होता है, solid state में होता है. Gaseous state का example water vapor, liquid state that is in water form H2O, and in solid form that is ice crystals. These are in the solid form. So water is present in this atmosphere. So moisture in the atmosphere is derived from water bodies through the process of evaporation. कि भाई moisture जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है आता कहां से, तो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर बॉडीज से क्या होता है, इवेपोरेट होके वाटर कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर. एंड इट आल्सो कम्स फ्रॉम द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन मींस the loss of water by evaporation through the stomata. So as we all know about the stomata of plants, so stomata से जो water evaporate हुआ है, that is transpiration. Okay, now our next concept is humidity. That what do you understand by humidity? That humidity is the amount of water vapor in the air. Humidity is the amount of water vapor in the air, or the water vapor present in the air is known as humidity. तो इसे हम quantitatively form में expressed करते हैं. जैसे for example, the first one is absolute humidity and the second one that is relative humidity. You have to differentiate absolute humidity and relative humidity. Then you can write down one question that distinguish between absolute humidity and relative humidity. So this question you have to do in your notebook. So absolute humidity is a measure of the actual amount. It is a measure of the actual amount of water vapor or moisture in the air. So absolute का मतलब ही यही होता है actual. So absolute humidity measure the actual amount of water vapor that right now in the air or the atmosphere. Actual amount क्या है water vapor का, वो आपका किससे पता चलेगा? Absolute humidity. So it is expressed as gram of water vapor per cubic meter. So that is the unit of the absolute humidity. Now the next one, that is relative humidity. Relative humidity is the amount of water vapor actually in the air expressed as a percentage of the maximum amount of water vapor the air can hold at the same temperature. So what do you understand by relative humidity? The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity, कि इसकी फुल कैपेसिटी का कितना पार्ट अभी एयर के अंदर वाटर वेपर या मॉइस्चर फॉर्म में है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे. एंड इन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, बट इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी वी आर गोइंग टू रिलेट, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिलेट द मॉइस्चर विद द एक्चुअल, कि कितना वो कंटेन करके रख सकता है और कितना अभी उसमें है, तो उसके परसेंटेज में बोलेंगे हम. जैसे हमारे मार्क्स होते हैं, मार्क्स क्या होते हैं, 100% होते हैं, लेकिन हमने कितने ऑब्टेन्ड किए हैं, तो ये हम परसेंटेज के अंदर जब उसको एक्सप्रेस करते हैं, जस्ट लाइक दैट यू कैन सी in this picture that at 10 degrees Celsius the relative humidity here is 100%. मतलब जितना relative humidity वो absorb कर सकता है उस air के अंदर, उतनी उसने कर रखी है. 20 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए टोटल तो कर सकता था 100, लेकिन कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, 52% है, तो रिमेनिंग नहीं है. फिर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे चलते हैं, तो यहाँ पे 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. इट मींस यहाँ पे जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है 100% ना होके, उसके रिलेशन में कितना है, ओनली 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज देयर और द मॉइस्चर इज देयर. तो इसको क्लियर करना है दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द एयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर. तो जितना होल्ड कर सकती है उसका केवल 28% ही
अवेलेबल है। यहाँ अगर देखते हैं इस एग्जांपल में, तो जितना होल्ड कर सकता है वाटर वेपर उसके कंपैरिजन में कितना होल्ड किया हुआ, सिर्फ 52%, और यहाँ पे 100%। तो रिलेट करते हुए जब हम ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, okay. Now the next important thing is that what do you understand by saturated? When we call the air is in its saturated form, when the air containing moisture to its full capacity at a given temperature. जैसे हमने ये वाला जो एग्जांपल था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, इसने अपने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे फुल कैपेसिटी मॉइस्चर को कंटेन कर रखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये सैचुरेटेड फॉर्म में। What do you understand by saturated form? ये सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है, क्योंकि इसने अपनी फुल कैपेसिटी, इससे ज्यादा मॉइस्चर वो होल्ड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मॉइस्चर वो होल्ड नहीं कर सकता, तो ये अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर है। नेक्स्ट वन दैट इज ड्यू पॉइंट, दैट वन इज ड्यू पॉइंट। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के अंदर आ रही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सीधा क्लाउड से आता है, क्लाउड इज द एक्सप्लेनेशन question of this chapter. So these are some of the terminology we have to understand this chapter. The next one, that is dew point. That what do you understand by dew point? The temperature at which saturation occurs in a given sample of air is known as dew point. जैसे देखिए यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और यहाँ पे पूरी एयर सैचुरेटेड हो गई, क्योंकि उसने जितना मॉइस्चर कंटेन करना था उतना मॉइस्चर इसने कंटेन कर लिया। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ के लिए क्या हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया। दिस वन इज द ड्यू पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट व्हिच सैचुरेशन अकर इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। तो आपको ये कुछ चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमिडिटी, then absolute humidity, relative humidity, and what is the basic difference between absolute and relative humidity. Absolute means actual amount of water vapor or the moisture in the air. Relative means that उसने कितना परसेंटेज होल्ड कर रखा है टोटल परसेंट ऑफ मॉइस्चर का, कितना परसेंट इस गिवन टेम्परेचर पे वो होल्ड तो 100% कर सकता है, और 100% का कितना परसेंट उसने अभी होल्ड कर रखा है। तो ये हमने एग्जांपल से भी यहाँ पे समझा था। Then the next one, that is saturated. That what do you understand by saturated? So saturated means the air containing moisture, when the air containing moisture to its full capacity, कि भाई अब इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता, then that temperature is at a given temperature, then that air is known as saturated. And the temperature at which saturation occur, वो जो given temperature जिसपे saturation हुआ है, that is dew point. Now the next point, that is evaporation. That what do you understand by evaporation? So as we all know that evaporation is a process by which water is transformed from liquid to gaseous state, from the H2O to the water vapor. So evaporation is the process by which water is transformed from liquid to gaseous state. And as we all know that heat is the main cause for evaporation. क्योंकि हीट होगा तो अब वो फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं रह के किसमें कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म के अंदर। और जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये किसमें आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा। तो हीट इज द मेन कॉज फॉर evaporation. Now the next thing, that the temperature at which the water starts evaporating, कितने टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ है, कितने पे वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है, मतलब एकदम गर्म होके इवेपोरेट हो रहा है, दैट टेम्परेचर is known as, yeah, that thing is known as the latent heat of vaporization. क्योंकि temperature से actually temperature is related to the heat, then latent heat of vaporization means the temperature at which the water starts evaporating is referred as. Okay, now the next thing, that is condensation. So the transformation of water vapor, the transformation of water vapor into water is called condensation. So condensation कब होगा, वापस वही जब उसे हीट मिला तो वो किस में कन्वर्ट हुआ लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, फ्रॉम H2O टू द वाटर वेपर। और अब जब लॉस होगा हीट तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर, एंड दैट थिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर into water is called condensation, and it is caused by loss of heat. When there is attainment of heat, then it causes evaporation,
एंड कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ इट। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। Next one, that is when moist air is cooled. When moist air is cooled, moist air, what do you understand the moist air? The air containing moisture. When moist air is cooled, it may reach a level when its capacity to hold water vapor ceases. और हमने बात किया था कि एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अब उससे ज्यादा मॉइस्चर वो नहीं रख सकता है, उससे ज्यादा मॉइस्चर नहीं रख सकता है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में वो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर समटाइम्स क्या होता है कि टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होके सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म एज वी ऑल नो दैट इज हेल स्टॉर्म जो होता है, या फिर हमारा जो आइस के अंदर होता है, स्नोफॉल होता है, तो इसके अंदर किस फॉर्म में आता है? वो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। So if it directly condenses into solid form, then it is known as sublimation. इसको क्या बोलेंगे हम? Sublimation. The excess water vapor condenses into liquid form, and if it directly condenses into solid form, then it is known as sublimation. तो आपको कंडेंसेशन के रिगार्डिंग इतनी सारी चीजें याद रखनी है। एंड कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर। बिल्कुल वॉल्यूम से अफेक्टेड होगा। उसके बाद में टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा डेफिनेटली। उसके बाद ह्यूमिडिटी से भी अफेक्टेड होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो सैचुरेटेड जल्दी होगा, लिक्विड फॉर्म में जल्दी आएगा। एयर का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा एयर है तो मॉइस्चर का रिटेनिंग भी उतना ज्यादा चाहिएगा। टेम्परेचर का भी बिल्कुल इफेक्ट रहेगा, जो हमने बात किया अभी सब्लिमेशन की हमने बात किया। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो डायरेक्टली कंडेंस हो जाता है, लिक्विड में ना होकर किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्यू। ड्यू के रिगार्डिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यू? तो ड्यू को देखते हैं। व्हेन द मॉइस्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। When the moisture is deposited in the form of water droplets, look at this picture। पहले तो इस पिक्चर को देख लो और डिफरेंस देख लेना ड्यू और फ्रॉस्ट में। इस पिक्चर को देखिए, look at this picture and look at this picture। You can see here the water droplets on the leaf, but here you can see, here what you see that जो कोल्ड सब जो ये अपने लीव्स है उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स, माइन्यूट मींस वेरी स्मॉल आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह क्या बन गई है? आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो गई। तो दैट इज फ्रॉस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस dew, that what do you understand by dew? So when the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid object, on cooler surfaces of solid objects. Look at this picture, you can see that on the leaves the water is deposited in the form of water droplets. So these leaves are somewhat cooler surfaces, solid objects rather than nuclei in air above the surface. तो वैसे तो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमने जो स्टडी किया था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इन दैट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द वेरियस डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, जिनके ऊपर वो एज अ न्यूक्लियई एक्ट करते हैं और उनके ऊपर मॉइस्चर जो है वो क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है। तो वहां ना होते हुए अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, जैसे लीव्स है एक प्रकार का सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कूलर है, क्योंकि होता कब ये मोस्टली आपको कब मिलेगा? आपको जो मिलेगा कोल्ड नाइट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो स्टोन्स, ग्रास ब्लेड्स, प्लांट लीव्स के ऊपर अगर इस तरह का मॉइस्चर डिपॉजिट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में, देन इट इज नोन एज ड्यू। देन इट इज नोन एज, तब उसको बोलेंगे हम ड्यू। Now let's talk about the ideal condition for its formation कि कौन सी conditions में ये बनता है। Then first one, that is clear sky। clear sky होगा तो उसका क्या होगा? तो हमने हीट बजट पढ़ा था, अभी डिस्कस्ड हीट बजट, इन विच क्या हुआ था हीट बजट के अंदर कि अगर स्काई क्लियर होगा तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत जल्दी हीट जो है वो क्या कर देगी? एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफर कर देगी, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, तो सरफेस हमारी जल्दी कूल हो जाएगी क्लियर स्काई की वजह से।
नेक्स्ट थिंग काम एयर, अगर हवा तेज चलेगी और चलेगी तो एक टेम्परेचर डिफरेंशिएशन लेके आ जाता है, एक प्रकार का टेम्परेचर डिफरेंशिएशन जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज द मॉइस्चर एंड द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेन्ड बाय द एयर, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर present by the actual moisture। एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, तो मैंने वैसे ही बात कर लिया, कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स होगी तो फिर क्या होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अपनी पूरी हीट जो है, अर्थ की पूरी हीट को क्या कर देता है, डेविएट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यस, now the next thing, for the formation of dew it is necessary that the dew point is above the freezing point, dew point is above the freezing point। और अगर ये ऐसा है तभी तो ये वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में, अगर आप सोचिए if dew point is below freezing point then it is not in water droplets, क्योंकि freezing point से अगर dew point नीचे है then it means यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह क्या होगा, आइस क्रिस्टल्स होंगे, यहाँ पे टाइनी आइस होगी, बर्फ जम जाएगी, क्योंकि फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग से फिर कम टेम्परेचर है तो बिल्कुल आइस ही जमेगा। जबकि ड्यू पॉइंट अगर अबाव है तो इसका मतलब आइस नहीं होते हुए किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। तो यहाँ पे इस चीज को लेके तो हमारे अंदर डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए लुक एट दिस लाइन, व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट में डिपॉजिट तभी तो होगा जब ड्यू पॉइंट जो है वो किससे ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो या फ्रीजिंग पॉइंट पे भी होगा तो फिर तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में। Now the next thing, that is frost, that what do you understand by frost? So frost forms on cold surfaces when condensation take place below freezing point। अब हमारी बात आ गई ना ये वापस, यहाँ पे क्या था, ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नाउ इन फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट और ड्यू में डिफरेंस भी यही है। फ्रॉस्ट फॉर्म इन द कोल्ड सर्फेस, कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 है, ये डिग्री है और ये सेल्सियस है, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। that is the dew point is at or below the freezing point, और अगर above हुआ तो फिर वो frost नहीं होके क्या होगा, dew होगा। that is not frost, that is dew। if dew point is at or below the freezing point then it is frost, and when the dew point is above the freezing point then it is dew। the excess moisture means extra moisture, the excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets। And what is the reason behind it? The reason is behind it is because the temperature is at or below the freezing point, that's why the moisture can't retain in the form of liquid, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते, वे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ white frost are the same as those of the formation of dew except that the air temperature must be at or below। तो आइडियल कंडीशन वही सेम होगी इसकी भी ड्यू वाली ही, जैसे क्लियर स्काई, काम एयर, high relative humidity, cold and long nights, these are the same ideal conditions of frost also, but the difference is only of temperature, that in frost the air temperature must be at or below the freezing point, and that's why the frost forms on the cold surfaces where the uh, where there is a temperature below freezing point। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। Next thing, that is fog and mist, that what do you understand by fog and mist? So when you look at this picture you can see the mist is somewhat, the mist अगर आप ध्यान से देखते हैं फॉग को और मिस्ट को देखते हैं तो नियर अबाउट आपको लगभग ज्यादा डिफरेंशिएशन करने को मिलता नहीं है, इसमें एक ही बेसिक डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट इज दैट See, the mist and fog is that mist contains more moisture than the fog. तो mist के अंदर जो moisture content है that is more than the fog. That is the only difference between fog and mist. बाकी आपको देखिए look wise same ही लग रहा है. Now let's have a look at the fog and mist content. When the temperature of an air mass containing a large quantity of vapor falls all of a sudden, कंडेंसेशन टेक प्लेस विद इन इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल। अब देखिए एक लार्ज एयर मास, एक लार्ज एयर मास जिसके अंदर क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, उसका टेम्परेचर एकदम से क्या हो जाए,
कम हो जाए, एकदम से फॉल मीन्स लो हो जाए, एकदम से उसका कम हो जाए, तो जो कंडेंसेशन टेक प्लेस करेगा, तो हमने बात किया था दैट आवर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, वेरियस particle, ash, pollen we discussed, ash, pollen we discussed. So we discussed in our previous classes. So that condensation is take place within itself on fine dust particle. जो condensation fine dust particle में होगा. So the fog is a cloud. Now look at this. A fog is a cloud, or we can say thick cloud that forms near the ground. A fog is a cloud that forms near to the ground. Because of the fog and mist, the visibility becomes poor to zero. तो क्या होता है हमारे जो विंटर सीजन के अंदर ये जो धुंध आती है, ओस आती है, इसकी वजह से विजिबिलिटी क्या हो जाती है, पुअर, और समटाइम्स इट्स जीरो, वी कांट सी एनीथिंग इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और अर्बन सेक्टर में क्या होता है ऐसा, जो वहां पे फॉग और मिस्ट बनने की फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा वो उसे हेल्प करता है. तो देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या होगा, स्मोक निकलती है, स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज आर देयर. तो वो इंडस्ट्रीज से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, बिल्कुल माइन्यूट डस्ट पार्टिकल. वो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल प्रोवाइडिंग न्यूक्लियई और एक्ट एज अ न्यूक्लियई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट. उनके लिए फॉग और मिस्ट के लिए वो एक न्यूक्लियई की, जो न्यूक्लियई मींस सेंटर, तो एक सेंटर की तरह एक्ट करते हैं, जिसके ऊपर वो फॉग मिस्ट क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. सो इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर स्मोक प्रोवाइड plenty of nuclei which help the formation of fog and mist. Now the condition when fog is mixed with smoke, when the fog is mixed with smoke, it is described as smoke. इसको क्या बोलेंगे हम, स्मोक बोलेंगे. और नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट contains more moisture than fog, and this is the picture of fog and mist. Fogs are mini clouds in which condensation take place around nuclei provided by dust, smoke and salt particle. ये हमने composition structure of atmosphere के अंदर पढ़ा था that our atmosphere is composed of dust particles, smoke, salt particle, ash, pollen. There are several things are there. Yes, yes, Mr. Lakshay. सर हमारे जो यहाँ सुबह होती है फॉग होती है, मिस्ट होती है. क्या सर हमारे जो सुबह मॉर्निंग में होती है वो फॉग होती है, मिस्ट होती है. ये फॉग होती है, फॉग और मिस्ट भी समटाइम्स. देखिए अगर मॉइस्चर ज्यादा है, अगर मॉइस्चर ज्यादा है एयर के अंदर, कई बार देखते हैं हम, अगर 1 minute. Now students, the next topic is cloud. The next topic is cloud. We are going to discuss now cloud. So cloud, what do you understand by cloud? So cloud is a mass of minute water droplets or tiny crystal of ice formed by condensation. We already discussed about the condensation, that the condensation is the conversion of a gas to a liquid. Conversion of a gas to a liquid. But here we are talking about the water vapor, H2O. And when condensation is directly into the solid, liquid में नहीं होते, solid में भी होता है. That's why it is converted directly into tiny crystal of ice also. So cloud is a large mass of minute water droplets or tiny crystal of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable elevation. क्योंकि elevation पे ये सब कुछ होता है. Look at this picture, you can see the stratus cloud which are formed near about 2 kilometers from the ground. Nimbus cloud are also, nimbus cloud are rain resulting clouds. 4 to 8 किलोमीटर आप देखिए क्यूमुलस है, 8 to 12 फिर आपको सीरस क्लाउड्स मिलेंगे. तो कहने का मतलब है कि कंसीडरेबल हाइट पे, एल्टीट्यूड पे these are formed. Okay, so as the clouds are formed at some height over the surface of the earth, they takes various shapes. Look at this picture again, you can see the shape of the cloud. In this you can see this, when you look at the cirrus clouds, they are formed at high altitude and they are somewhat looking feathery structure. इस तरह के feathers होते हैं, पंख होते हैं, उस तरह का structure आपको कहीं ना कहीं इसको दिख रहा है. And when you look at the clouds, the cumulus clouds are somewhat looking like cotton wool. हम जब cotton wool लेते हैं तो उसके जैसी structure इसकी देखने को मिलती है. So every cloud having a definite structure, उसकी एक अलग से structure होती है, shape होती है. According to their height, expanse, density, transparency और opaqueness. Opaqueness हम इसको 4 types में divide करते हैं. देखिए height अलग अलग है,
उसकी चौड़ाई अलग अलग है, डेंसिटी भी अलग, ट्रांसपेरेंसी जब देखते हैं कुछ एक क्लाउड्स होते हैं वो पूरी तरह से सन की रेडिएशन को बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं एकदम। तो ट्रांसपेरेंसी और ओपेक्यूनेस भी तो है डिफरेंट डिफरेंट है। सो दीज आर क्लासिफाइड, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाउड इज cirrus, cumulus, stratus and nimbus. Cirrus, cumulus, stratus and nimbus. The first one, that is cirrus. Cirrus are formed at high altitude, सबसे ऊपर देखिए, look at this picture. These are formed at 8,000 to 12,000 मीटर, 8,000 to 12,000, अब ये 8 to 12 किलोमीटर बोल दीजिए चाहे 8,000 to 12,000 मीटर बोल दीजिए। तो cirrus clouds are formed at high altitude, सबसे ज्यादा ऊपर यही बनते हैं। They are thin, detached, मतलब इतने ज्यादा क्या नहीं होंगे, थिक नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, अटैच्ड नहीं होंगे, ये डिटैच्ड रहते हैं बिल्कुल, तभी ये कैसे दिखते हैं, feathery appearance, having the feathery appearance, and they are always white in color, they are always white in color, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है। Next one, that is cumulus. Cumulus clouds look like cotton wool. When you look at this picture, these are the cumulus clouds which are formed somewhat at in between height. Cumulus clouds are somewhat looking like cotton and wool. Yes, they are generally formed at the height of 4,000 to 7,000 meter. They exist in patches and can be seen scattered here and there, and they have flat base. When you look at this picture, they are having flat base. इसका base कैसा होता है? Flat होता है. The next one, that is stratus. Stratus, as its name implies, हमने स्ट्रेटा कहाँ कहाँ पढ़ा है? हमने स्ट्रेटा देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पढ़ा है. We studied the strata in sedimentary rock, and what it means? The rock containing layer is सेडिमेंट्री रॉक या स्ट्रेटा बोलेंगे उसी को। तो यहाँ पे ये जो क्लाउड्स है इसके अंदर क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई को क्या करता है, कवर करता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। These clouds are generally formed either due to loss of heat और the mixing of air masses with different temperature. तो हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन जो होता है, इवेपोरेशन इज ड्यू टू द हीट एंड कंडेंसेशन इज ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट, और डिफरेंट टेम्परेचर की एयर मासेस जब मिक्स होंगी तो भी ये क्लाउड बनते हैं। लुक एट दीस क्लाउड्स, यू कैन सी ये रहा स्ट्रेटस क्लाउड, आप देखिए किस तरह से स्कैटर्ड है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज निम्बस। निम्बस आर ब्लैक और डार्क ग्रे। जो हमारे रेनी सीजन के अंदर आपको जो क्लाउड्स दिखते हैं रेनफॉल वाले, बिल्कुल ब्लैक जो क्लाउड्स होते हैं, they are nimbus clouds. They form at middle level or very near to the surface of the earth. You can see they are very near to the surface of the earth. Sometimes at the middle level also they are formed. These are extremely dense and opaque to the rays of the sun. बिल्कुल एकदम से सन की रेस को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और डेंस होते हैं क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। The clouds are so low that they seem to touch the ground, and nimbus clouds are shapeless masses of thick vapors. ठीक है, तो शेपलेस होता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही शेप हो, शेपलेस है, और ये masses of the thick layers रहता है। तो ये नियर अबाउट ये है। तो हमारा क्लाउड, अप टू क्लाउड वी कंप्लीटेड इन दिस क्लास, एंड वी आर we'll start our next topic in our next class. Okay students,